Hello everyone, welcome to Sambhab IAS by Textbook. Let's analyze each and every important articles and editorial from the today's newspaper. And today is 20th June 2026. So first of all, आमे कौन करिवा गोटे मैप देखिबा आजर मैप रे अछि आपनकर इंपोर्टेंट रेड सी ताहले आमे गोटे ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ रेड सी ताहले जदि आपण देखिबे ताहले ट्रिक्स हला आपनकर कोन डेजी DESSEY प्रथमे देखिबा जिबुती आपण देखि परिबे ठीक अछि डी रु आसी जिबा आपनकर जिबुती देन आपनकर पाखरे अछि इजिप्ट क्लियर देन आपनकर पाखरे एस सुडान एवं तार फ्रंट रे देखि नबा आ गोटी एस अछि सऊदी अरेबिया दीटा हे गला देन आपनकर पाखरे आसिला ई आउडी अछि इथियोपिया देन आपनकर पाखरे वाई अछि येमेन क्लियर किबा आपण देखंतु केमिति मन रखिबे डेजी जिबुती इथियोपिया सुडान आ गोटी एस आसीबो सऊदी अरेबिया देन आसीबो ई रु इजिप्ट एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपनकर आसीबो वाई येमेन तो रेड सी को रिमेंबर करिवार एहा अछि गोटे शॉर्ट ट्रिक्स समस्त मन रखिया पई बाउंड बा हम समस्त कोन करिया पड़ियो एगुडा को मन रखिया को पड़ियो चलंतु आउ डिले न करिके देखिनबा आज रो फर्स्ट आर्टिकल कोन अछि जेमिति कि हम समस्त जानि छथि 2 रु 3 पेज हेलानी कोन ना आपनकर हिंदू कथा कहंतु किबा आपनकर इंडियन एक्सप्रेस रे मध्य इंडियन एक्सप्रेस रे कोन अछि ना दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड द कॉप्स ऑन द टेलीग्राम एमिड नीट रो जदि आपण देखि पारि ताल कोन अछि ना एनटीए रो रिक्वेस्ट फल रे कोन हेतिला ना गवर्नमेंट कोन करछि अंडर द आर्टिकल 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 बेस रे कोन करछि टेलीग्राम को कंप्लीटली बैन करछि के पर्यंत आपनकर अप टू नीट एग्जाम ठीक अछि तो आमे देखिनबा कोन अछि इंपोर्टेंट आपनकर रहला GS2 एंड गवर्नेंस फंडामेंटल राइट्स एंड डिजिटल रेगुलेशंस तो इंपोर्टेंट आर्टिकल गुडा को आमे ऑलरेडी 2 दिन हेला डिस्कशन करछंती तेनकरी क्विकली आमे गो थ्रो करनबा टेलीग्राम वाज देखिबा allegedly कोन हेतला ना यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क फॉर द एग्जाम पेपर लीक साइबर फ्रॉड स्कैम्स इलीगल डाटा शेयरिंग्स these are the important aspects we already discussed in the previous 2 days news analysis तो right now कोन करिया अछि मोस्ट इंपोर्टेंट आउथर आमे रिवाइज करिया कोन आर्टिकल 19(1) ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस आर्टिकल 21 कोन कहला राइट टू प्राइवेसी एवं एडे केस आपन को मन रखे गुडी बा जजमेंट आपन कहि परिबे अनुराधा भासिन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2000 जेतोला आपनकर कोन हेतला इंटरनेट को कोन करा हेतला ना बडा राइट टू आपनकर कहि परिबे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर रे काउंटेड करा वाला ठीक अछि ये थला आपनकर वे फॉरवर्ड आमे ऑलरेडी डिस्कशन करछंती राइट नाउ मूव करिया आमे आजरो इंपोर्टेंस देखिबा कोन अछि इंपोर्टेंट आपन को पय गोटे मेसेज रहिबो जदि आपन चाहछते ए पीडीएफ को पाइबा पय देन आपन ए टेलीग्राम रे जॉइन हो जानतु सिविल्स बाय संदीप सर क्लियर एठी आपनकर पीडीएफ गुडा सब अपलोड होबो आपन टेलीग्राम जेतोला आपनकर रन करिया स्टार्ट हो से बेठो आपन कोन हिजिबे पाइ परिबे पीडीएफ गुडा नो मोर डिले देखिनबा मोस्ट इंपोर्टेंट ताल आजरो आर्टिकल रे गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट देखिनबा कोन अछि आजरो न्यूज रे walking on the footpaths a fundamental right ruled by the supreme court most important tal why in the news देखिनबा different article अछि आपनकर right of the way जेमिति कि देखिबा आउडेट देखंतु कोन अछि walking on the footpath is a fundamental right supreme court रे गोटे आपनकर verdict अछि जदि आपण देखि परिबे ताल तार इंपोर्टेंस कोन GS2 and GS3 fundamental rights and judiciary urban development and the road safety and the infrastructure तेनकरी एगुडा हो तार एस्पेक्ट गुडा को तो आपण कहि परिबे व्हाई न्यूज काहे कि जिनसडी न्यूज रहछि आपनकर देखंतु कोन घटिथला ना आपनकर जदि आपण देखि परिबे तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू वॉक ऑन द डिमार्केटेड एंड द वेल मेंटेन्ड फुटपाथ मोस्ट इंपोर्टेंट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ताहले द जजमेंट केम व्हाइल डिसाइडिंग ए केस इन्वॉल्विंग द डेथ ऑफ ए 5-year-old children who was hit by a truck while walking to school तो 5 वर्ष रो गोटे पिला जेतबेले से स्कूल को जाउथिला सेतबेले तार डेथ हेइथिला बाय हिट हेबा फल रे गोटे ट्रक द्वारा क्लियर ताहले सुप्रीम कोर्ट कोन करछि सुप्रीम कोर्ट कोन तार वर्डिक्ट्स गुडा को प्रोवाइड करछि राइट नो आमे चलन तो डिस्कशन करिवा ताल की ऑब्जेक्टिव्स गुडा बा ऑब्जर्वेशन आपनकर कोन रहइबो सेफ वॉकिंग इज ए बेसिक ह्यूमन राइट्स मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ वॉकिंग इज ए बेसिक ह्यूमन राइट्स राइट नाउ if a road exists most important जदि गोटे रोड एक्जिस्ट करूछि देन
Authorities have a duty to provide and maintain the footpaths. Most important, if there is a road, then the authorities have a duty to provide and maintain a footpaths. तेणुक कौन करिया पड़िबो अथॉरिटी को प्रोवाइड करिया पड़िबो गोटे well maintained footpaths. The right of the pedestrians overrides the privileges of the motorized vehicles. एवं जदि एठी आपण देखिबाक चाहिबे government and the urban local bodies are duty bound to ensure the pedestrian safety. तेणु करी पादरे चलुवा लोक मानकर सेफ्टी को कंसर्न करिया पई एठी आपनकर गवर्नमेंट एंड द अर्बन लोकल बॉडीज आर बाउंड और बाउंडेड से मान क्लियर जदि आपण कॉन्स्टिट्यूशनल रो लिंकेज देखिबे आर्टिकल 21 कोन कहला राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिंक्ड विथ द राइट टू लिव with dignity and access the safe public space ए आर्टिकल टा को आपन आर्टिकल 21 को आपन हिंदी रो आज आर्टिकल सहित आपन रिलेट करी परिबे क्लियर एबे वे फॉरवर्ड कोन आसीबा आपनकर एडी देखंतु हमें डेवलप करिया उडे कंटीन्यूअस एंड एनक्रोचमेंट फ्री फुटपाथ्स so what we have to do we have to develop a continuous and the encroachment free so there should be no vendor there should be no vending zones clear and adopt the pedestrians friendly urban planning. So here is the question, is the urban government or the urban local bodies is providing the safe footpaths for the pedestrians or not? Then what the another point, strengthen the road safety measures and enforcement. रोड सेफ्टी को आम एनफोर्समेंट करबा एवं तार स्टैंडर्डाइजेशन मेजर्स गुडा को मध्य अपहेल्ड करिया पई बाउंड allocate the dedicated funds for the pedestrians infrastructures, promote the inclusive and the sustainable urban mobility. So here are the few key points regarding the article. So from that article what we got to know, we got to know that walking on the footpaths right now is a fundamental right. Clear? If anyone violate this, then we can directly move to Supreme Court and High Court. So here are the few important articles regarding Supreme Court under the Article 32 provide few reads like that. High Court also under the Article 2 to 6 provide read jurisdictions. Clear? Okay. तो ये थिला आज रो आपनकर आर्टिकल रो इंपोर्टेंट डाटा देन मूव करिवा नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट एठी उडा आपनकर देखंतु डिस्प्यूट रिगार्डिंग तमिलनाडु एंड द कर्नाटक रिगार्डिंग गोटे न्यूज अछि तो तमिलनाडु असेंबली ऑन एनिमसली अपोज द डैम एट मेकेडेटू डैम्स रिगार्डिंग आपनकर तमिलनाडु गवर्नमेंट कोन करछि ना तार आपण कहि परिबे पढिनवा देखंतु The Tamil Nadu Assembly on Friday unanimously adopted a resolution moved by the Chief Minister C. Joseph Vijay, opposing the Karnataka government's proposal to construct a balancing reservoir at the Kaveri across the Kaveri at Mekedetu. Clear ताले कौन अच्छी न्यूज़ देखी नबा? Why is in news? तो ये context कौन रही ना? कर्नाटका गवर्नमेंट कौन करी ना? कावेरी रिवर रोड ट्राइब्यूटरी रिवर अच्छी सी जोड़ी से कन्फ्लिक्ट जोन से कौन कर ना गोटे रिजर्वर पे आपनकर डैम कंस्ट्रक्शन करिया पई जाउ अछि किंतु ए जो घटनाटा को तमिलनाडु गवर्नमेंट कौन कर ना कंटेम्प्ट करिछि एवं बैन पई से कौन कर ना क्लेम करछि तो एठी देखिनबा तमिलनाडु असेंबली ऑन एनिमसली पास द रिजोल्यूशन अपोजिंग व्हाट कर्नाटका's proposals मेकेडेटू बैलेंसिंग द रिजर्वर अक्रॉस द कावेरी रिवर तमिलनाडु आर्ग्यूड दैट द प्रोजेक्ट वायोलेट तो तमिलनाडु सरकार कौन आपनकर क्लेम करछंती बा आर्ग्यू करछंती तमिलनाडु गवर्नमेंट कहिछि कि कर्नाटका गवर्नमेंट वायोलेट करूछि आपनकर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल व्हिच वाज हेल्ड इन 2007 and the Supreme Court judgment in 2018 तो कौन थिला डिटेल्स घटना चलंतु वन बाय वन देखिबा ताले इस तो मु आपन को ऑलरेडी बुझाई देली कर्नाटका प्रपोज करछि कोन गुडे बिल्ड करिया पे मेकाडेटो डैम्स और द रिजर्वर ऑन द कावेरी रिवर्स क्लियर ताहले मोस्ट इंपोर्टेंट एठी देखिबा कोन अछि तमिलनाडु फियर्स दैट द प्रोजेक्ट मे रिड्यूस द डाउनस्ट्रीम वाटर फ्लो टू द स्टेट्स
ताले कावेरी रिवर रे जदि आपनकर एई कन्फ्लक्स जोन रे गोटे डैम बा रिजर्वयर हबो एटा कर्नाटक देन आपनकर तमिलनाडु तमिलनाडु फेयर करूछि कि मे बी डाउनस्ट्रीम रिजर्वयर हेबा द्वारा कोन हो ना डाउनस्ट्रीम वाटर गुडा फ्लो टू द स्टेट्स कोन हो रिड्यूस हो जाई पारे तेनु करी the dispute concerned the equitable sharing of the Kaveri river water between the riparian states in between Karnataka as well as the Tamil Nadu एबे देखिबा मेकेडेटू डैम डिस्प्यूट कोन अछि लोकेशन जति अपन तार देखिबे ताल मेकेडेटू इज अ डीप गॉर्ज गोटे आपनकर ऑन द कावेरी रिवर इन कर्नाटका located at the confluence of the Kaveri and the Arakvati ताल Arakvati rivers रा confluence zone आपनकर दिस इज कावेरी इट इज आपनकर Arakvati एई कॉन्फ्लेक्स जोन रे कोन करिया जाउछि कर्नाटका गवर्नमेंट गोटे डैम बा आपनकर रिजर्वयर बनिया को जाउछि जदि आपण देखि परिबे सिचुएटेड एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ द कृष्णा राजा सागर डैम एंड द अपस्ट्रीम ऑफ द तमिलनाडु बॉर्डर मोस्ट इंपोर्टेंट तमिलनाडु रो अपस्ट्रीम एडे को एवं कृष्णा राजा सागर डैम रो डाउनस्ट्रीम एडे को से डैम रो लोकेशंस मीनिंग ऑफ द मेकेडेटू दिस इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर अस ताले पर्पस कोन रहबो से डैम रो पर्पस आज द बैलेंसिंग रिजर्वयर प्रोजेक्ट बाय द कर्नाटका क्लेम करछि कि आमे गोटे बैलेंसिंग रिजर्वयर प्रोजेक्ट बनेबा को जाऊ अछु intended to provide the drinking water to the Bengaluru and the generate hydroelectric power कर्नाटका आर्ग्यू करछि it will not affect the Tamil Nadu's allocated share कर्नाटका एठी क्लेम करछि कि this will not affect the Tamil Nadu's share on river Kaveri देन कावेरी रिवर रिगार्डिंग किछटा हम फैक्ट देखिनबा जति आपण ओरिजिन देखिबे तलकभारी रु आपनकर ओरिजिन लेंथ तार नियरली 800 किमी स्टेट्स कर्नाटका तमिलनाडु केरला बे ऑफ बंगाल छडा जाय कि आपनकर पडिबो क्लियर एवं तार मेजर ट्राइब्यूटरी गुड जेमति काबेनी हेमावती आकारवती दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एई कॉन्फ्लेक्स जोन रे आपनकर कोन होची मेकेडेटू डैम बनेबा को जाऊ अछि देन भवानी एंड अमरावती क्लियर एवं इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड द जजमेंट जदि आपण देखिबे ताले इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड जजमेंट रिगार्डिंग व्हाट कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स इन बिटवीन व्हाट कर्नाटका एंड तमिलनाडु सो फर्स्ट ऑफ ऑल कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आपनकर सीडब्ल्यूडीटी इन 2007 सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट आसला के आपनकर 2018 रे इंप्लीमेंटिंग बॉडी कोन रहबो ना सीडब्ल्यूएम अथॉरिटी बा आपण कहि परिबे कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोन रहला आपनकर 262 एवं लॉ कोन रहला इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 these are the institution and judgment of the supreme court as well as the tribunals जदि आपण देखि परिबे ताले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू मेकेडेटू एंड द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट रिगार्डिंग कोन अछि आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आमो पई कोन इंपोर्टेंस बा आपनकर एस्पिरेंट्स मानको पई कोन इंपोर्टेंट रहइबो देखिनबा ताहले आर्टिकल 262 adjudication of the interstate river water dispute ताहले आर्टिकल 262 कोन कहिला व्हाट डज इट से Parliament can make law for the adjudication of the dispute relating to interstate river and the river valley most important once again Parliament can exclude the jurisdiction of the Supreme Court and the other court in such dispute ताहले Parliament also exclude करी परिबो ताले why is it important water we all know that it is a sensitive issue between the states instead of direct litigation disputes are resolved through tribunal created by the Parliament example जदि आपण देखि परिबे कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस प्रोविजन तनो जो प्रोविजन अंडर रे कोन हेतिला कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गुडा आपनकर कॉन्स्टिट्यूटेड हेतिला ठीक से जदि आपण देखिबे ओपीएस में कोन प्रीलिम पई आर्टिकल 6262 क्वाट पार्लियामेंट्री में प्रोवाइड एडजुडिकेशन डिफरेंट आपनकर क्लॉज गुडा सब अछि तो एति थिला आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा एंड फैक्ट ताले कोन थिला राइट नाउ आउ थरे हम रिवाइज करिवा मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर कर्नाटका एवं तमिलनाडु भितर गोटे कॉन्फ्लिक्ट चलिया जाउछि बुझला कर्नाटका कहला कि मु गोटे मेकेडेटू डैम बनेबी जोडा कि तमिलनाडु डिसएग्री अछि एवं तमिलनाडु रो आर्ग्यू अछि कि डाउनस्ट्रीम रो कावेरी रिवर डाउनस्ट्रीम रो वाटर कोन मे बी रिड्यूस होई पारे राइट नाउ मूव करिया नेक्स्ट आर्टिकल कोन अछि आपनकर इंपोर्टेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन जदि आपण देखिबे ताहाल देखि नियंतु इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 व्हाट इज इट enacted under the article 262 provide for the setting of the water dispute tribunals गुडा को सेटिंग करिया पई गुडा आपनकर एग्जांपल देखिबा डिफरेंट ट्रिब्यूनल जेमति कि आपनकर कावेरी ट्रिब्यूनल कृष्णा ट्रिब्यूनल गोदावरी ट्रिब्यूनल
रवि एंड व्यास ट्रिब्यूनल्स ठीक से परी एंट्री 17 एंड द स्टेट लिस्ट रे कोन होछ ना आपनकर व्हाट डज इट कवर वाटर सप्लाईज इरिगेशन कैनाल ड्रेनेज एंड वाटर शॉर्टेज सिग्निफिकेंसली आपण जे देखि पारिबे ताले वाटर इज ए प्राइमरी स्टेट सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वाटर केउठी अछि आपनकर लाइज कर स्टेट सब्जेक्ट मे भी आपण प्रीलिम रे गोटे क्वेश्चन पाई परिबे वाटर बिलोंग्स टू यूनियन सब्जेक्ट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ठीक से जब देखिए सब्जेक्ट एंट्री ऑफ द 56 ऑफ द यूनियन लिस्ट एंट्री 56 रे कोन कहला व्हाट डज इट कवर रेगुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरस्टेट एंड द रिवर वैली मोस्ट इंपोर्टेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट वाटर आसला आपनकर स्टेट लिस्ट रे किंतु 56 एंट्री आपनकर यूनियन लिस्ट रे कोन कहला ना इंटरस्टेट रिवर एंड द रिवर वैली इन पब्लिक इंटरेस्ट तेणुक यूनियन गवर्नमेंट को गोटे अथॉरिटी प्रोवाइड करिवो व्हेन ए रिवर फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट एग्जांपल आपण ऑलरेडी देखि परिया काबेरी जेमिति का आपण डिफरेंट रीजन गुडा करे फ्लो करथला एवं आर्टिकल यदि 131 देखिबे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तेणुक सुप्रीम कोर्ट रो एहा गोटे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जोडी कोन करिवो ना सुप्रीम कोर्ट कैन हियर करि परिबो डिस्प्यूट बिटवीन व्हाट सेंटर एंड स्टेट किबा आपनकर स्टेट वर्सेस स्टेट रो आर्गुमेंट्स गुडा क्लियर दो आर्टिकल 262 may restrict the court intervention in water sharing disputes constitutional and the implementation related issue can still reach the supreme court जदि आर्टिकल 262 रेस्ट्रिक्ट करिवो कोर्ट को इंटरवेंशन पाई स्टिल आपण मध्ये अप्रोच करि परिबे राइट नाउ वी कंप्लीटेड ऑल द important data and facts from this article so right now move to the next one एट देखिए गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अछि आपन कोन कहला देखो एडिटोरियल इंडियाज चीपेस्ट पावर इज हियर द ग्रिड मोस्ट कैच अप ताले ग्रिड गुडा को हमें कैच अप करिवार अछि ताले व्हाई इन न्यूज जदि आपन रिलेवेंस देखिबे यूपीएससी बा ओपीएससी एंगल जीएस3 आपन इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सिक्योरिटी रिन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट चेंज एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ बा ग्रीन ग्रोथ आपन जहा कहि परिबे सो व्हाई इन न्यूज न्यूज रे काहे किछबे तार इंपोर्टेंस कोन अछि आज तले जो एडिटोरियल टा आर्ग्यू करछि कि दैट द इंडियाज सोलर एंड द विंड पावर आर नाउ अमंग द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट से कोन कहला ई डाटा टा को आपण मेंस रो आंसर राइटिंग रे मते यूज करि परिबे तो इंडियाज सोलर एंड विंड पावर आर नाउ अमंग द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड बट देखिया बट कोन अछि द मेजर चैलेंज ताले मेजर चैलेंज कोन रहउछि ना इ द ट्रांसमिटिंग दिस पावर इनटू एफिशिएंटली ताले से जो पावर टा आपण जनरेट करले ताको ट्रांसमिट करि परिबा दरकार एफिशिएंटली थ्रू द नेशनल ग्रिड ताले ग्रिड लाइन थ्रू रे आपण जहां भी किछि पावर गुडा को आपण जनरेट करले ताको जे स्मूथली किबा आपणकर ट्रांसमिटिंग करि परिबे इजीली देन आमे कहि परिबा कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बिकम द क्रिटिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द इंडियन क्लीन एनर्जी फ्यूचर तन करी फ्यूचर रे आमे इंडिया रो क्लीन एनर्जी रो टारगेट को एफिशिएंटली अचीव करि परिबा बोली आमे जुक्ति बाढी परिबा क्लियर ताल कोन अछि समरी से आर्टिकल द आर्टिकल एम्फसाइजेस दैट द रियल पावर लाइज नॉट ओनली इन द जनरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी ए आर्टिकल कहला कि आपनकर रियल पावर टा नाही खाली ओनली केउठी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग करिवारे किंतु से जो जनरेशन एबा आपनकर जहां भी किछि आपन जनरेट करछन इलेक्ट्रिसिटी ताको जदि आपन स्मूथली ट्रांसमिट करि परिबे थ्रू ग्रिड देन वी विल से दैट वी वुड अचीव दैट द टारगेट तेणुक इंडिया has rapidly expanded the renewable energy capacity but transmission bottlenecks are preventing full utilization of the clean energy जदिओ इंडिया कंप्लीटली बा आपण कहि परिबे तार टारगेट को अचीव करि छारिछि किंतु हडल केउठी आसला आपनकर हड हैला आपनकर ट्रांसमिशन गुडा कोन करछि ना आपनकर प्रिवेंट करूछि इंडिया को कहा केउथि पई आपनकर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द क्लीन एनर्जी तेल करी आमे कोन सब करि परिबा देखंतु वे फॉरवर्ड गुडा को आपनकर बा इनिशिएटिव कोन रहबा दरकार अपग्रेडिंग द एक्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन जहां भी किछि आपनकर पाखरे एक्जिस्टिंग लाइन गुडा अछि ताको आमे अपग्रेड करिबा ता ऊपर आमे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी कि ताकू फोस्टर करिबारे साहाय्य करिबा यूजिंग द एडवांस्ड कंडक्टर तेनकुरी एडवांस कंडक्टर गुडा को आपनकर यूज करिबा को बाउंड आमे क्लियर जदि आमे वर्ल्ड सहित कॉम्पिटिटिव बा वर्ल्ड रो डिफरेंट एस्पेक्ट सहित आमे जो कोन एडवांसमेंट आडा को नै जिबार अछि पेयरिंग द रिन्यूएबल एनर्जी विथ द स्टोरेज
ठीक से क्रिएटिंग रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स तेणुक आमको कौन करियार अछि इंडिया को कौन करिया पड़िबो क्रिएट करिया पड़िबो रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स गुडाक जेगुडा आम कौन लॉन्ग टर्म पर्यंत तार बेनिफिट गुडा आम पाई परिबा ठीक से बिल्डिंग द स्मार्टर एंड द ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट आमको कौन करियार अछि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करियार अछि एफडीआई अलाउ करियार अछि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करियार अछि एवं रिटर्न ऑफ आरओआई मध्य करियार अछि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वे फॉरवर्ड कौन रहबा आपनकर सजेशन अपग्रेडिंग द एक्जिस्टेंट डिफरेंट जेमिति एक्सपांड द बैटरी स्टोरेज इंटीग्रेशन विथ द रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स फ्यूचर प्रूफ ऑल न्यू ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रमोट करिवा स्मार्ट ग्रिड्स एआई बेस्ड मॉनिटरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिजिटल ग्रिड मैनेजमेंट encourage the public and the private investment in transmission of the infrastructure तेणुक इंडिया रो चीफेस्ट पावर इज हियर किंतु द ग्रिड मस्ट कैच अप तेणुक ग्रिड लाइन गुडा को आमे एडवांसमेंट आडा को नहीं परिले हमर फुल कैपेसिटी बा आपण कोन फुल्ली यूज करि परिबे इंडिया रो क्लीन एनर्जी इज इट ऑल क्लियर राइट नाउ मूव करिया नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट देखिन एटी कोन कहले आपनकर डिफेक्शन एज ए मर्जर द 10th शेड्यूल इज फॉलोड आउट बाय द अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट काहे कि न्यूज रछि आपण देखि परिथिबे पूर्वर थिला कोन आपनकर राघव छडा विथ 2/3 एमपी फ्रॉम व्हिच पार्टी आप आसिकी मर्ज बा आपनकर जॉइन हेथिले बीजेपी ठीक से जदि आपण देखिबे ताहाले 6 MP of the Shiv Sena UBT are seeking to join what Eknath Shinde faction party re. Since they constitute 2/3 of the party Lok Sabha MPs, they are claiming तेणुक से माने क्लेम करछन्ति कि प्रोटेक्शन मागुछन्ति अंडर द व्हाट मर्जर प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ ताले एंटी डिफेक्शन लॉ आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ कोन कहला ना दीटा आपनकर गोटे थिला स्प्लिट एवं राइट ना अछि आपनकर मर्ज देन 2003 रे कोन हेतला ना प्रोग्रामेंट करी के जो स्प्लिट प्रोविजन टा हमें कोन करथिले अबोलिश करथिले राइट नाउ हम पाखरे गोटे बा ओनली मर्जर अछि जोडा के आपनकर 2/3 किंतु आपनकर स्प्लिट प्रोविजन 1/3 थिला जदि 3 जण रु जणे एठी आसला आपनकर 3 जण रु 2 जण क्लियर गोटे एग्जांपल नै हम आपको डिटेल बुझेबी ताले डिफेक्शन कथा आसी गेला जेहेतु देखिनवा कोन अछि आपनकर क्रक्स डिफेक्शन आर इंक्रीज इन द पार्लियामेंट विथ एमपी शिफ्टिंग allegiantly and despite being elected on different parties mandate आपण जे कोन पार्टी रे मैंडेट रे इलेक्टेड हेतांतु किंतु डिफेक्शन राइट नाउ बहुत सारा प्रैक्टिस हेबारा हम नजारा देख सले ठीक अछि तन करी एंटी डिफेक्शन जे आपण देखिबे 10th शेड्यूल रे अछि वाज एनेक्टेड टू प्रिवेंट व्हाट पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी एंड opportunistic floor crossing but its effectiveness is being undermined although in 91st constitutional amendment act 2003 abolish the spill exception कोन अछि आपनकर जोडे के आपनकर 2/3 merger provisions yet politicians are using this route to avoid the disqualification तो कहिवार मीनिंग हला पॉलिटिशियन माने बहुत चालाक से स्प्लिट प्रोविजन जदियो स्प्लिट कोन करथला ना स्प्लिट वाज इजियर एवं मर्जर वाज डिफिकल्ट किंतु राइट ना हमें कहि परिबा कि पॉलिटिशियन माने एते चालाक हे गेलेनी जे से जो मर्जर प्रोविजन को मध्य से कोन करछंती क्लेम करिवारे सफल हो जाऊ अछंती क्लियर तेन करी many so called merger are actually an engineered defections disguised as mergers ताल कॉन्टेक्स्ट कोन अछि ये तो थिला आपनकर रिगार्डिंग आर्टिकल रो क्रक्स एबे हम देखिबा ओपीएससी पई कोन आपनकर इंपोर्टेंट प्रथम दिन से देखिबा व्हाई वाज इंट्रोड्यूस्ड जदि आपण देखिबे बिफोर 1985 कोन होतला ना frequent defections by the MPs and the MLAs led to political instability and collapse of the government 19 before 1985 कोन होतला ना frequent defection by the MPs and MLAs जेमिति कि आपनकर गोटे फेमस इंसिडेंट देखिबे आयाराम गयाराम इन 1967 ताले हरियाणा रो एमएलए गयालाल चेंज्ड पार्टीज मल्टीपल टाइम्स इन ए सिंगल डे ताले गोटे सिंगल डे रे से कोन करथिले ना मल्टीपल पार्टी गुडा को स्विच करथिले became a symbol of the political opportunism and horse trading
घोड़ा बेपार जोटा आपण कही थांती राइट नाउ आमे रिसेंट राज्यसभा इलेक्शन रे आपण देखि पारथिबे ओडिसा रे ये जो टर्म हॉर्स ट्रेडिंग बा आपनकर घोड़ा बेपार बहुत चर्चित बा आपनकर चर्चा रे थिला। तो एठी आसिला देखिनबा ग्राउंड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ताले केउ ग्राउंड रे आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ लागिबो बा आपण डिफेक्टेड हेबे इफ ए मेंबर जदि गोटे मेंबर कोन करछि डिस्क्वालिफाइड इफ voluntarily gives up the party membership जदि voluntarily give up करछन्ते गोटे पार्टी रो मेंबरशिप सेकंड votes or the abstains against the party whip जदि पार्टी व्हिप रो अगेंस्ट से वोट करछन्ती मे लागि परिबे तांको ऊपरे इंडिपेंडेंट मेंबर्स जॉइन ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन इंडिपेंडेंट मेंबर्स माने कोन करि परिबे इमीडिएटली आपनकर बा आपनकर जॉइन करि परिबे पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन किंतु nominated members join the party after the what 6 month of the nomination एक्सेप्शन देखिबा स्प्लिट आपनकर ऑलरेडी कोन हितला abolished राइट नाउ मर्जर एक्सेप्शन ता आपनकर प्रैक्टिसाइजिंग होछि तेन डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इफ 2/3 मेंबर एग्री टू मर्ज विथ अनदर पार्टी कॉन्टेक्स्ट ए आप पार्टी थिला आप पार्टी रो 2/3 एमपी कोन करिवे ना आसिकी बीजेपी रे जॉइन करले तेन करी तांको अगेंस्ट रे डिफेक्शन एठी लागि परिबो नाही काहे कि से माने 2/3 एमपी कोन कले गोटे अनदर पार्टी को जॉइन कले जेउठी सेटा केउ प्रोविजन आपनकर डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल आपनकर मर्जर एक्सेप्शन को कोन वैलिड बा जस्टिफाई करी पारिले एबे एठी हु डिसाइड करिवे कि स्पीकर एंड चेयरमैन इंपोर्टेंट जजमेंट जदि आपन देखिबे कियोतो हॉलन वर्सेस द कियोतो हॉलन केसेस रे कोन हेतला ना अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे समस्ते स्पीकर्स डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तेन करी स्पीकर कर डिसीजन को मध्य गोटे कोन जुडिशियल रिव्यू आमे करि परिबा जुडिशियल रिव्यू केउ आर्टिकल रे आपन कर आसुसी अंडर द आर्टिकल 13 क्लियर देन नाबाम रेबिया वर्सेस द डेप्यूटी स्पीकर can't decide the disqualification while a motion for his removal is pending जदि तांकर मोशन ता कोन पेंडिंग अछि एवं एगुडा होछि आपनकर क्रिटिक्स पॉइंट गुडा को आपन मन रखिबे आपनकर मेंस पॉइंट रे लिखिबा पाई मोस्ट इंपोर्टेंट आपन को गुडा एग्जांपल देखि बे बुझेबी कोन केमिदि आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड गुडा को इवॉल्व होला बा आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ रो जर्नी कोन थिला क्लियर आमे ऑलरेडी जानथिले बिफोर प्रॉब्लम बिफोर 1985 कोन हेतला जेतबे आपनकर 1967 इलेक्शन हला इंडिया विटनेस्ड वाइड स्प्रेड आयाराम गयाराम politics where elected representatives frequently change the party and switch कले different party गुडा एठी गुडा कोन आपनकर नीड पडिला ना नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गुडा अमेंडमेंट रा आवश्यकता पडिला छन कोन तेन कोन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड नो प्रोविजन टू प्रिवेंट द डिफेक्शन ओरिजिनली कोन से प्रोविजन हम पाखरे नथिला फ्रीक्वेंट फ्लोर क्रॉसिंग वीकेंड द डेमोक्रेसी तेन कोन डेमोक्रेसी को वीक करिया रे गुडा सहायक हला टू एनकरेज करप्शंस एंड डिस्टेबलाइज द इलेक्शन गवर्नमेंट Then what happened in 52 Constitutional Amendment Act 1985? The government led by the Rajiv Gandhi introduced आपनकर anti-defection law. What did it do? It did करिवो कोन ना added कला 10th schedule to the constitution and laid down the ground for the disqualification of the defection legislator. तेनकर जो माने स्विच करिवे पार्टी ताको अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन लागिवो तेनकर weakness in the original law the law allowed protection देखंदु ओरिजिनल लॉ रे कोन प्रोटेक्शन थिला if 1/3 of the legislators split from a party most important split करि जिवे केउठ आपनकर गोटिए पार्टी रु सपोज ए पार्टी रु which was widely misused तेनकर ए जो प्रोविजन टा समस्त वाइडली कोन मिस यूज करबा को लागिले देन एडी मध्य गोटे मुंड विधार कारण हला पुनी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे कोन कला ना ता गोटे चेंजेस करा गला the core misuse गुडा कोन कला ना the split provisions was removed most important only the merger provision 2/3 member was retained जहा को यूज करी कि कोन आम आदमी पार्टी रो राघव चड़ा एवं अदर एमपी माने आसिले एवं एवं राइट नाउ आपन जो केस आपन देखि पारि यूटीवी रो आपनकर सिंधेस फैक्शन आडा को मूव करछथि तेन करी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोन छिबा पोजीशन आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटिन्यूड इन द 10th शेड्यूल valid merger required support from the at least 2/3 member of the party एवं डिस्क्वालिफिकेशन रो डिसीजन गुडा को टेकन बाय स्पीकर एंड चेयरमैन नॉट बाय अदर्स मोस्ट इंपोर्टेंट एटा आपन समस्ते रिमेंबर करिवे एबे गुडा एग्जांपल लेके हम बुझिबा देखंतु
1/3 split provision versus the 2/3 most merger provisions. Before the 2003 old rule कौन होता ना, suppose a party has 90 ml, गोटे party पाखरे कौन अच्छी 90 ml अच्छी, if 1/3 of the 90 then ताले कौन हो 30 ml कौन कले left the party and form the new group. They were not disqualified कहीं कि हमें पूर्वरु हमें जानी थिले हमें originally ए provision टा split provision गोटे कौन थिला provide करथिला, तेन को this was called what split provision. Most important किंतु problem कौन आसिला, politicians started exploiting these loopholes. तेन को ये जो loophole रो फायदा टा को समस्त उठेबा को लागिले एवं continuously बार बार कोन ना आपनकर misuse हेबा को लागिला. Example तेन को get 1/3 ml together, leave the party, form a new group, escape the disqualification. This led to what frequent defection and the unstable government. सेटु कोन ना आपनकर in 2003 एडी कोन आसिला आपनकर 91st CAA 1/3 split provision was completely abolished. एवं new now only 2/3 merger provision remain. ताल एहार context कोन रहबो, suppose a party has 90 ml then आपनकर 2/3 60 MP कोन करिवे ना, they must कोन करिवे एग्री हेबे एवं party को लीव करिवे, they must merge with another political party, then this will not be disqualified. This is called merger provision. समस्त क्लियरली बुझ पाले, yes or no? Okay, thank you. Move to the next article. कौन अच्छी next article आपनकर moving from drone purchase to drone partnership. ताले why is it news? GS3 under रे आपनकर defense technology, internal security, science and technology, indigenization of the defense production under रे हमें आर्टिकल टाको नहीं परिबा. Most important देखिनबा कोन अछि. Right now the government of India is planning to spend 2 billion drone to procurement from domestic manufacturer, signaling a major push toward the indigenous defense manufacturer. ताले उडा कोन करिबा आपनकर boost करिवो indigenization of what weapon technology and the growing importance of the drone in modern warfare. तेन को modern warfare रे drone रो importance हम समस्त already जानी अछंती. ताले एडिटोरियल गुडा क्लेम कोन करछि ना, इंडिया नाउ कोन करछि आपनकर नीड्स करछि मोस्ट इंपोर्टेंट, just give me a second, move beyond the simply buying drones and focus on the long term partnership with the drone manufacturer. जो तो अपन देखिबे एडिटोरियल रो क्रक्स कोन अछि, shift in nature of the warfare. Modern war increasingly rely on small and cheap expendable drones rather than only expensive platforms such as fighter aircraft and tanks. Right now कोन अछि ना आपनकर रशिया वर्सेस यूक्रेन वार, ईरान वर्सेस यूएस वार रे कोन हितला ना, यूक्रेन एंड आपनकर ईरान स्मॉल एवं चीप ड्रोन गुडा को यूज करी की यूएसए एंड रशिया रो क्रोर सपोज गोटे ड्रोन अछि मो पाखरे ए ड्रोन जार प्राइस होछि लाख्स रे, किंतु से गोटे डैमेज पहुंचे दउछ आपनकर गोटे बडो एयरक्राफ्ट को जार प्राइस होछि क्रोर रे. सेति पई ए आर्टिकल रे कहा जाय छि कि इंडिया को कोन करियर अछि मॉडर्न वारफेयर पई ड्रोन इंडिजेनाइजेशन ऊपर कोन प्राइम फोकस देबा निहाती आवश्यक. क्लियर. तेन करी इनोवेशन इज कंटीन्यूअस, procurement is not the main challenges. The real challenge is not purchasing the drone but keeping them operationally relevant through the upgrades and modification. Existing procurement system is transactional. कहर meaning suppose Ukraine versus Russia war चलछि, यूक्रेन कोन कला ड्रोन गुडा को निक्षेप कला केउठी के आपनकर रशिया ऊपर, किंतु रशिया रो टेक्नोलॉजिशियन माने कोन कले जामर लगाइ देले आपनकर, तेन करी ड्रोन गुडा कोन फेल्युअर आडे को पळैला. काहे कि सेगुडा आपनकर एक्जिस्टिंग प्रोक्यूरमेंट सिस्टम जोडा कि आपनकर ट्रांजैक्शनल बा आपन ताको ट्रेस करी पारिबे, किंतु सेडी यूक्रेन कोन कला निजस्व कोन कला ना, से यूक्रेन तार निजस्व इंजीनियर माने को द्वारा ड्रोन गुडा को सब बनेया एवं सेगुडा कोन बहुत सारा अटैक आपनकर पहुंचैले रशिया पर बोली आपन कहि पारिबे. तेन को नीड फॉर द पार्टनरशिप मॉडल ये रहला आपनकर डिफरेंट क्रक्स एही आपनकर आर्टिकल रो. एबे देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट आमे गुडे एग्जांपल मु आपन को बुझौची बुझिनबा. देखन समस्त गुडे स्टोरी मु बुझैली, देखन स्टोरी गुडे रिमेंबर करंतु. फ्रॉम बाइंग देखन मु गुडे स्टोरी आपन को कहली, फ्रॉम आपन को बाइंग
स्मार्टफोन टू स्मार्टफोन पार्टनरशिप पर्यंत बुझि पाले म कोन कहली ताहले बाइंग स्मार्टफोन नो ओनली फोन भाबी नै एटा होची आपनकर ओनली फोन फोन टू आपनकर व्हाट फोन वर्सेस स्मार्टफोन पार्टनरशिप कहियार मीनिंग ता कोन हला आपनकर इमेजिन करंतु इंडियन आर्मी इज ए लार्ज कंपनी जोड़ा कि आपनकर गुड ओल्ड ट्रांजैक्शनल मॉडल तले जो कंपनी कोन करिवो 1000 स्मार्टफोन 1000 स्मार्टफोन गुडा को परचेज करिवो इन 2026 फोन डिलीवर हे गला पेमेंट आपनकर कंप्लीट हे गला देन आफ्टर 2 ईयर भाबिनियो तो 2028 बा 29 एडा को कोन हला ना आपनकर सॉफ्टवेयर गुडा को आपनकर अपडेटेड हे गला एवं न्यू एप्स डोंट वर्क प्रॉपर्ली तन को जो ऐप गुडा को आपनकर प्रॉपर्ली स्मूथली रन करि परला नाही तन करी सिक्योरिटी थ्रेट गुडा को आपनकर एमर्ज हेबा को लागिला तन करी कंपनी को कोन करिया पड़िबो वन्स अगेन पुनी थरे फोन बाय करिबा को पड़िबो क्लियर तन करी ए गुडा को आपनकर सिमिलरली केउठी डिफेंस जे जहा को आपन ट्रेडिशनल डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम बा वेयर द आर्मी बाय इक्विपमेंट एंड रिलेशनशिप एंड जदि आपण वन्स कोन कले यूएसए किंबा रशिया पाखरु सपोज भाबी नियंतु किछुटा हमें इक्विपमेंट किनिले डील एंड हैला देन दे आर नॉट अकाउंटेबल टू अस किंतु एबे देखिबा हमें न्यू सिस्टम जहा को हमें कहिबा बा स्मार्टफोन पार्टनरशिप सिस्टम जोडा हम बुझिबा इंस्टेड ऑफ बाइंग वन्स द कंपनी साइन कोन कला ना उडे 10 ईयर पार्टनरशिप विथ द मैन्युफैक्चरर तेन करी रेगुलरली हम कोन करिबा 10 ईयर पर्यंत सॉफ्टवेयर अपडेट पाई परिबा सिक्योरिटी गुडा को पैचेस करि परिबा हार्डवेयर गुडा को हम मध्ये अपग्रेड करि परिबा क्लियर एवं टेक्निकल सपोर्ट मध्ये पाई परिबा तेन करी दिस इज एग्जैक्टली द एडिटोरियल सजेस्ट फॉर द ड्रोन तेन करी एई क्रक्स ता आपन ड्रोन पाई मध्ये एडिटोरियल रे सजेस्ट करा जाई अछि तेन करी व्हाई इज दिस इंपोर्टेंट फॉर ड्रोन्स काहे ना इमेजिन करंतु जदि इंडिया कोन करछि ना बाय करछि 10000 ड्रोन टुडे एवं इन द वार कोन होबो ना द एनिमी डेवलप गुडे जामर करि देला एवं 6 रु 8 वीक भीतर बा आपनकर भाबि नियंतु 1 मंथ भीतर कोन हला ना एटु ब्लॉकेज आसिगला आपनकर ड्रोन रो सिग्नल तेन करी इफ इंडिया फॉलो करथु आपनकर ओल्ड प्रोक्योरमेंट मॉडल देन आमे एठी कंप्लीटली फेलियर बोली कहि परिबा एठी आपण कोन करि परिबा तेन करी आमे एडवांस एवं पार्टनरशिप मॉडल ले कोन इंडिजिनाइजेशन करि कि निजे डेवलप करिया को चेष्टा कले आम फाइड बेटर बोली कह जाई राइट नाउ स्विच करिबा नेक्स्ट आर्टिकल को मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल गोटे आपनकर देखिनबा कोन अछि कल्चरल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल इज न्यू एफएटीएफ वाइस प्रेसिडेंट ताले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रो कोन होचंती न्यू प्रेसिडेंट होचंती आपनकर विवेक अग्रवाल क्लियर तो व्हाई इज इन न्यूज देखिबा यूनियन कल्चर सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रॉम द टर्म जुलाई 2026 टू जून 2027 से सक्सीड का करिवे गिल्स थॉमसन को सक्सीड करिवे रिलेवेंस इंपोर्टेंस कोन आसीबा आपनकर GS2 GS3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस GS3 अंडर कोन आसीबो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग एंड इंटरनल सिक्योरिटी मोस्ट इंपोर्टेंट जोडा कि ऑलवेज कोन आपनकर न्यूज रे सब बेले थाए ताहले प्रथम कथा हमें देखिबा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एफएटीएफ कहर मीनिंग ता हमें कोन बुझिबा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहर मीनिंग होची गुडा होची स्टैंड्स फॉर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इट इज द ग्लोबल वॉचडॉग अगेंस्ट कहा अगेंस्ट रे ग्लोबल वॉचडॉग मनी लॉन्ड्रिंग समस्त हम जानि छथि टेरर फाइनेंसिंग टेरर मानक फाइनेंसिंग प्रोवाइड करिबा प्रोलिफेरेशन फाइनेंसिंग ताले प्रोलिफेरेशन कहर मीनिंग होची जदि प्रोलिफेरेशन रो मीनिंग देखिबे प्रोलिफेरेशन मीनिंग होची द रैपिड स्प्रेड और द इंक्रीज ऑफ समथिंग जोडा कि आपन रैपिडली इंक्रीज करिवो स्पेशली वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन सच एज न्यूक्लियर वेपन केमिकल वेपन बायोलॉजिकल वेपन्स तेन करी एई जो आपनकर प्रोलिफेरेशन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडिंग फंड्स फाइनेंशियल सर्विसेज और द रिसोर्सेज दैट हेल्प द डेवलपमेंट व्हाट एंड द एक्विजिशन और द स्प्रेड ऑफ द व्हाट WMD कहर मीनिंग होची आपनकर वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन गुडा को जदि प्रमोट कला ताको हमें कोन एफएटीएफ अंडर रे बुझी परिबा तार मीनिंग होची प्रोलिफेरेशन पूरा क्लियर ओके
तो कथा आसिला व्हाई इट इज इंपोर्टेंट फॉर इंडिया. India became the member of FATF in 2010. India has been actively pushing the action against the what terrorism. Vivek Agarwal earlier headed the India's delegation during the FATF mutual evaluation process. Way forward देखिए कौन अच्छी जदि आपण देखिबे India has achieved a major diplomatic milestone with the appointment of the Vivek Agarwal as a FATF Vice President of the term 2026 to 27. तेणुक ये जो अपॉइंटमेंट रिफ्लेक्ट करिवो कोन ना ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ द इंडियाज एफर्ट इन कम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड इलिसिट फाइनेंसिंग फ्लोज गुडा. Vivek Agarwal also played a key role in the FATF mutual evaluation process leading to India's multidisciplinary delegations. FATF होछि आपनकर गोटे वर्ल्ड रो प्रीमियर बॉडी फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेररिस्ट फाइनेंसिंग. Therefore, the position carries significant international influence for India. तेणुक आम एक्सपेक्टेड करिया कि टू एनहांस द इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन द इश्यू सच एज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग, इलिसिट फाइनेंसिंग फ्लो एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. तो ये थिला आपनकर रिगार्डिंग व्हाट एवं एफएटीएफ अंडर रे गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट आपनको मन रखिया पड़ियो गोटे होची आपनकर ग्रे लिस्ट एगोटे आपनकर होची ब्लैक लिस्ट. मीनिंग कोन आसीबो ना ग्रे लिस्ट कहर मीनिंग कंट्रीज अंडर द इंक्रीजिंग मॉनिटरिंग जहां पर कोन इंक्रीजिंग चली छी एवं ब्लैक लिस्ट हाई रिस्क कंट्रीज विथ सीरियस डेफिशिएंसीज. तो एफएटीएफ रे एक्शन कोन रहबो ना गिवन टाइम टू इंप्रूव आपन गोटे समय देबो जेडी कोन सब्जेक्ट टू व्हाट स्ट्रिक्ट काउंटर मेजर्स गुडा को नबो ब्लैक लिस्ट ऊपर. इकोनॉमिक इंपैक्ट कोन करिवो रिड्यूस द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड सीवियर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन मध्ये लागि परिबो. इंटरनेशनल लैंडिंग कोन डिफिकल्ट बट पॉसिबल किंतु हाईली रेस्ट्रिक्टेड. एग्जांपल यदि देखिए पाकिस्तान 2018 रो 22 राइट नाउ से मूव कर जाई छी. नॉर्थ कोरिया एंड ईरान आपनकर ब्लैक लिस्ट अंडर रे अछंती. मॉडरेट टू रिस्क एडा हो आपनकर हाईएस्ट रिस्क. ये थिला आपनकर व्हाट FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिगार्डिंग किछटा डाटा. आई होप ए डाटा गुडा आपनकर पई मोस्ट बेनिफिशियल प्रोवाइड हेबो. नेक्स्ट मूव करिया नेक्स्ट आर्टिकल कोन अछि गोटे सिंपल आर्टिकल आपनकर देखिनबा अछि गोटे कहा अगेंस्ट रे आपनकर सॉरी GS1 को बिलोंग करिवो आपनकर जियोग्राफी एंड द GS3 अंडर रे कोन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट. ताले कोन घटिछि घटना 4 ग्लेशियल लेक्स इन अरुणाचल प्रदेश हैव एक्सपैंडेड इन ए डेकेड. गोटिए डेकेड बा आपनकर 10 ईयर भीतर कोन होइछि ना आउट ऑफ 5 लेक चारटा आपनकर एक्सपैंड कर जाइछि एवं मेजरली गोटे कोन करछि ना नियरली 10 एकर आपनकर सॉरी 10 हेक्टर आपनकर कोन करछि ना एक्सपैंड हबार एग्जांपल मध्ये देखा दैछि. तेनु करी व्हाई इन न्यूज a satellite study in the Tawang district of the Arunachal Pradesh have found 4 out of high risk lakes glacial lakes gudago in the Magochu basins have expanded over the last decade, raising the concern about the glacial lake outburst floods GLOFS. Although it is not directly enumerating the floods, but we can expect floods in future. ताले इंपोर्टेंस फाइंडिंग गुडा कोन देखबा हम ऑलरेडी मु कहि सालेनी 4 आउट ऑफ 5 लेक्स एक्सपेंडेड बिटवीन व्हाट 2016 एंड 2026 भीतर ड्यू टू कोन पय आपनकर ग्लेशियल रिट्रीट एंड द इंक्रीज्ड मेल्ट वाटर स्टोरेज. तेनु करी ग्लेशियल रो मेट अंड हेबा द्वारा कोन लाई जो लेक गुडा आपनकर एक्सपांड करी जाय छी. तेनु करी मोस्ट इंपोर्टेंट आपनकर सैनहापो लेक्स शोड द हाईएस्ट ग्रोथ 70.07 हेक्टर इन 2019 राइट नाउ कोन अछि आपनकर नियरली व्हाट 10 हेक्टर आपनकर इंक्रीज जाय छी बोले आपन कहि पारिबे. तेनु करी एनडीए में आपनकर क्लासिफाइड करछि गुडे को वेरी हाई रिस्क लेक्स एक्सपेंडेड बाय अबाउट 1 हेक्टर ईच. तेनु करी दर्कसा सो हाई रिस्क लेक आपनकर आल्सो रिकॉर्डेड द ग्रेजुअल एक्सपेंशन. वन लेक रिमेन ब्रॉडली स्टेबल आउट ऑफ पांचटा कोन अछि ना गोटे स्टेबल अछि एवं चारटा आपनकर मोस्टली एक्सपेंड करि जाई अछि. अच्छा बे देखिबा व्हाट इज GLOF ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लोड इज ए सडन रिलीज ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्लेशियल लेक व्हेन द नेचुरल डैम फेल. जेतले आपनकर नेचुरल डैम गुडा फेल करि जिवे ताले सडन आउटबर्स्ट हो कोन वाटर गुडा आबो रिलीज हो. कोजेस कोन करिवो जेमिति कि आपनकर ग्लेशियल मेल्टिंग करि परिबो, लैंड स्लाइड से आपन करि परिबो, avalanches करि परिबो, आइस फॉल्स करि परिबो एवं फेलियर ऑफ द मोरेन डैम्स रॉक एंड डेब्रिज बैरियर गुडा को मध्ये आपन नेचुरली फेल हो जाई पारो. जदि आपन देखिबे ताले ए जो कॉन्टेक्स्ट रे इज देयर एनी डेंजर फॉर द अरुणाचल प्रदेश
ताहले अरुणाचल प्रदेश पई कोन किछि डायरेक्टली डेंजर अछि कि यस बट नॉट इमीडिएट डिजास्टर द स्टडी हाइलाइटिंग द पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क नॉट कन्फर्म फ्लोड thereafter सॉरी फ्लोड थ्रेट पॉसिबल डेंजर गुडा कोन हेपर जेमति कि ग्लेक गुडा कोन आउट सॉरी ग्लेशियल लेक गुडा आउटबर्स्ट करि परिबे डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर्स थ्रेट टू द लोकल कम्युनिटीज क्लाइमेट रे मध्ये चेंजेस रो किछटा आपण इंपैक्ट देखि परिबे तेन करी ग्लेशियोलॉजिस्ट अनिल कुलकर्णी क्वेश्चन देछन्ति कि लेक एक्सपेंशन अलोन can't be used to predict a disaster other factors such as landslides avalanches rockfalls and the condition of the moraine dams determine the actual risk alone आपणकर GLOF कोन करि परिबो नाही गुडे आपणकर फ्लोर्स नै आस परिबो ये थिले गुडे आपणकर शॉर्ट आर्टिकल एवं नेक्स्ट जिबा हम देखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट देखंत कोन कहछि इटाली टॉप डिप्लोमेट कैंसिल कले यूएस ट्रिप काहे कि मेलोनी स्लैम्स कले ट्रम्प कर क्लेम ऑन द फोटो ऑफ ट्रम्प कहले कि मेलोनी कोन करछि ना मते बैक करथिले गुडे मो सता फोटो कैप्चर करिबा पाई तेन करी व्हाई इन न्यूज GS2 रे आपनकर फॉलो करिवो GS सेकंड इटली फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो टाजानी cancel his planned US visit after the US president Donald Trump reportedly claimed kole kana that the Italian prime minister Giorgia Meloni had begged most important for a photograph with him during the recent G7 summit Italy कोन करछि strongly rejected and claim करछि कि एवं condemn मध्य करछि बोली आपण कहि परिबे Donald Trump allegedly कोन करछन made a remark suggesting that the Giorgia Meloni requested a photo opportunity with him at the G7 summit Italy viewed करछि गुडा the remarks as offensive and disrespectful towards both the prime minister as well as the country एवं आंटोनियो टाजानी कोन करछन कैंसिल करछन ताकर ट्रिप को हम कहि परिबा एवं जॉर्जिया मेलोनी मध्ये पब्लिकली डिनाइड करछन एंड क्लेम करछन कॉलिंग इट completely fabricated and stating Italy and I do not beg Italy किबा मु आपन बेग करी ना हो ए गोटे आपन शॉर्ट आर्टिकल जोडे कि आपन गोटे क्रक्स बोली हम कहि परिबा राइट नाउ मूव करिया लास्ट आर्टिकल आज रो sickle cell anemia to be eradicated by the 2047 जदि आपन देखि परिबे ताले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू on the Friday said कोन करछन ना आपन the country would eradicate sickle cell anemia will be before the government set target कोन करछि आपन 2047 importance GS2 health and social justice GS3 biotechnology disease and public health why in news government of India is implementing the national sickle cell anemia elimination mission 2023 to target कोन रहछि ना 2047 to eliminate the sickle cell disease as a public health problem especially among the tribal population most important एटा जे आपनकर especially tribal population को भीतर देखा जिबार नजर आछि बोली एठी हमर कहै जाई अछि ताले प्रथम बुझिबा व्हाट इज sickle cell anemia sickle cell anemia is a genetic inherited blood disorder in which red blood cells गुडा को आपनकर became कोन हे जिबे ना sickle shaped बा आपनकर crescent shaped like that instead of what normal round disc beyond रे कोन हे गुडा को sickle हे जिबे जे जाफल कोन हो ना blood रे कोन हो ना abnormal cell गुडा कोन करिवे ना blood vessel गुडा को reduce करिवे एमे ऑक्सीजन सप्लाई टू द blood tissue ब्लॉक कर दे blood vessel को एमे reduce हो कोन एठी आपनकर ऑक्सीजन सप्लाई टू द blood tissue cause गुडा कोन हो जेमति कि आपनकर म्यूटेशन इन द HBV gene affects the production of the hemoglobin inherited in an autosomal recessive pattern ओडिशा रे कॉन्टेक्स्ट जदि आपण देखिबे ताले ओडिशा हैज वन ऑफ द हाईएस्ट बर्डन ऑफ द सिकल सेल डिजीज इन इंडिया कॉमन अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी जेमति कि आपनकर कोंद गोंड भुइया मुंडा एंड ओरांग लिंक टू द ट्राइबल वेलफेयर पब्लिक हेल्थ एंड द जेनेटिक्स एंड द सोशल जस्टिस देन व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल ऑलरेडी हम डिस्कशन कले जहा कि गुटे हेरिडिटरी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर गुडा एटी कोन होबना आपनकर से नॉर्मल आरबीसी राउंड एंड फ्लेक्सिबल ब्लड गुडा को कोन करिवे ब्लड सेल गुडा को सिकल आरबीसी हे जिबे क्रेसेंट शेप्ड हे जिबो एंड रिजिड हेबे जेगुडा कि आपनकर ब्लॉक करिवे कोन ब्लड वेसल को रिड्यूस करिवे ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू तेन करी जदि आपण देखिबे ताले व्हाई ओडिशा इज वल्नरेबल जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन हाई प्रिवेलेंस इन जेमति कि डिस्ट्रिक्ट गुडा देखि नियंतु कंधमाल कोरापुट रायगढ़ मालकानगिरी नवरंगपुर मयूरभंज एंड सुंदरगढ़
Tribal population, the disease is more prevalent among the scheduled tribes living in malaria endemic regions. Scientists also believe that the sickle cell trait provided partially protection against the malaria, leading to its persistence in the tribal population. ताले challenges कौन आसीबो सब? Late diagnosis, most important आपनकर late diagnosis. Many patients are diagnosed only after severe symptoms appear. Lack of awareness, inadequate screening, social stigma, limited special care. Government initiative कौन अछि आपन जति कहि परिबे? Government initiative नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम 2023 तार टारगेट कौन रही? 2047 बेलू आम कौन करवा? एलिमिनेट करवा इराडिकेट कर। वे फॉरवर्ड गोटे कौन आसो आप यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मोस्ट बी implemented. Strengthen the primary health care facilities, expand the newborn and screening program, promote the genetic counseling before marriage, increase the awareness in local languages, improve the access to what? Hydroxyurea and the blood transfusion facilities, integrate SCD management with tribal welfare program. एगुड़ी हूँ आप मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स एवं राइट नाउ आमे मूव करिबा गोटे मेंस क्वेश्चन मु आपन को प्रोवाइड करिवि। ठीक अछि, कहा ऊपर आपन सिकल सेल एनीमिया ऊपर नो प्रॉब्लम। व्हाई सिकल सेल डिजीज इज highly prevalent among tribal population. एवं डिमांड टू कौन आसीबो? examine the challenges in its prevention and management. ये रही आपनकर मेन क्वेश्चन। ट्राई करिए समस्ते विदिन 250 वर्ड्स भीतर लिखिबा पाई क्लियर। एवं जदि आपन देखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट मु कोन कहली आपनकु आपनकर अप्रोच केमित रहबा दरकार ऑलरेडी बुझैथिली। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को प्रथम डिकोड करंतु, देन हेडिंग को मध्ये डिकोड करंतु। इफ यू हैव रेडीमेड इंट्रो and conclusion, then it will be easier to write the answer. Okay, thank you, no issue, thank you.